is better to become a good peon rather than become a bad engineer. कि parental pressure या parental advice, मतलब मेरे parents क्या चाहते हैं. काफी बार इमोशनल इश्यूज भी होते हैं कि मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं. Just because your father is wishing you to become an engineer, so you should become an engineer. So I don't think so. But when you go for the interview, that interviewer is not interested in what subjects we have studied. You can't become an entrepreneur by attending a seminar on entrepreneurship, right? ये भी DMIT ये तो काफी पुराना है, बट देन इसका रिजल्ट नहीं मिलता. DMIT एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोड्स जनरेट कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, बट देन राइट टाइम पे उसका कहीं यूज करना, उस रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है जब एक्चुअल में आपको जरूरत है. Hello everyone, welcome to the platform of Utkarsh Consultants. Today we are going to discuss about the counseling. How counseling is important and how a counselor can play an important role in your career in different stages. So to highlight the importance of counseling, today we have called upon with us Mr. Bhavsar. He is an assistant professor in the computer science and engineering department at Navrashna University. So here I would like to request today everyone to watch this video with your family, and special request to parents and a student to see this entire video at a very calm mindset and a place. Don't watch this in a parts and in a haphazard manner. This is my disclaimer for you. I request you to watch this video till end to clear all your doubts regarding the counseling at the different stage of your life. Thank you. So, welcome sir. Welcome to our platform of Utkarsh Consultants. Yeah. First of all, I would like to thank you so much because this is a very prime time. Yes. तो सबसे पहले तो I want to know some details about your background. आप नवरत्ना यूनिवर्सिटी में आपका एक अच्छे डेजिग्नेशन पे आप हो, अगर आप उसका भी कुछ ब्रीफ दे सके तो काफी सही रहेगा. Yes, my pleasure. Yeah, thanks. First of all, I would like to thank Utkarsh Consultants, right, for inviting me for this session. Yes, I am Professor Bhavsar, and I have been associated with Navrashna University as an assistant professor, and I have more than 20 years of academic experience in the field of IT education. So I feel myself privileged enough that I have been in contact and association with students for such a long time, for such a long period. And apart from regular teaching and the regular technical aspects of education, I have been fortunate enough to handle various other portfolios, especially those portfolios which are touching some other aspects of students, especially like admissions, placements, and so on. So I got the opportunity to deal quite closely with the students, identify what kind of confusion, what kind of dilemmas, what kind of problems they face during these phases, especially while taking admissions or while deciding career paths, while deciding about placements and so on. So the aim of this session is basically purported to first identify what kind of confusion or what kind of issues are typically faced by the student community as far as taking admissions is concerned, and of course once they get admitted, then taking various career decisions, and even after taking a career decision, midway during the journey of the career, when some kind of switching needs to be done, then how it is to be done, what are the issues in that. So I think that is the major aim of this today's session. Yes, of course. That is the major aim. तो आप अभी जो आप पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं नवरत्ना यूनिवर्सिटी में, उसमें आपका काउंसलिंग का भी पार्ट है, राइट? तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपने रीसेंट अगर कोई ऐसे एग्जांपल हो, क्योंकि नवरत्ना यूनिवर्सिटी इज एन अगेन NAC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, राइट? Yes, yes. What do we call that affiliation? Yeah. So I would just briefly describe about what is Navrashna University. Basically, Navrashna University is a NAC Grade A accredited university. It's a private university in the Vadodara region, Okay. and it belongs to the same management of Navrashna Education Trust, of which the Navrashna School, which is very famous throughout Baroda. So this Navrashna Education Trust and the various organizations of this trust, Navrashna University or be it Navrashna School, they have been serving as an epitome of education since decades. Okay. Epitome of quality education since decades. So
as far as the university is concerned, I am associated in the computer science and engineering department as an assistant professor. So apart from handling teaching responsibilities, taking lectures and laboratory sessions of various subjects, IT oriented subjects, I happen to handle the admission portfolio here. And apart from that, in my previous organizations also, I've handled the portfolio of training and placement at a departmental level. Okay. So I got the opportunity to interact with students right now and in the past also. I have closely dealt with students and seen the kind of confusion and dilemmas which they face. Right. So, if we talk about a student who have passed a 12th standard, okay, Okay. can you give me few of your experience or your learnings? How is the mindset of that student when he is choosing the particular stream, whether he wants to go for an IT or whether he अभी जैसे BBIT के कोर्स है, Right. सिर्फ IT के कोर्स है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे IT रिलेटेड कोर्स है और बहुत सारे नॉन IT भी कोर्सेज है. बट जब स्टूडेंट जब कोर्स सिलेक्ट करने के लिए जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, जब उसका एडमिशन काउंसलिंग का सेशन शुरू होता है, तब उनका क्या माइंडसेट होता है और उनके पेरेंट्स का क्या माइंडसेट होता है? Right. तो see basically मैं इसको इस तरह से I would like to put up that how irrespective of whether he is a 10th pass student or whether he is a 12th standard student, right, or whether he is a UG student and planning for some PG course, irrespective of that, there are some general factors, there are some general criteria कि जिसके बेसिस पे students admission लेते हैं. The first and foremost thing which is driving the student's decision is basically the gap between his expected result and performance and the actual result and performance which he gets. Okay. तो इससे स्टूडेंट दो कैटेगरी में आ जाता है. इफ ही इज गेटिंग द रिजल्ट और इफ हिज परफॉर्मेंस इज एज पर हिज एक्सपेक्टेशन और बेटर देन हिज एक्सपेक्टेशन, देन ही कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बेसिकली टू चूज कि भाई बेटा तुझको ये चाहिए कि ये चाहिए. अगर आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आया है तो फिर आपको जो मिल रहा है वो आपको हाँ, लेना मतलब वो पड़ता है. प्रेशर एक होता है कि भाई नहीं, अब मेरे पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है. एग्जैक्टली. Right? तो नाउ द चॉइसेस बिकम वेरी लेस, तो उसमें से उसको चूज करना होता है. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. दैट इज वन थिंग. ओके. सेकंड थिंग इज बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड इज गोइंग ऑन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आफ्टर 10th या आफ्टर 12th का अगर हम कंसीडर करें तो नॉर्मली वी हियर दैट मेनली पीपल आर गोइंग फॉर आईटी ओरिएंटेड कोर्सेज कि भाई आजकल कंप्यूटर और आईटी का जमाना है. तो when we talk about engineering, almost everybody wants to go for computer engineering, or let's say they want to go for robotics or electronics like that. Drones की Right. बात आती है तो immediately robotics का मतलब स्टूडेंट्स robotics के बारे में सोचते हैं. True. तो एक तो जो जो करंट ट्रेंड है, उससे अट्रैक्ट होते हैं Yes. स्टूडेंट्स एंड दे थिंक कि भाई ये करेंगे एंड विल डू दैट, राइट? जी, तो जो ट्रेंड्स होते हैं और जो सुनी सुनाई बातें होती है एंड द काइंड ऑफ हाइप एंड परसेप्शन दैट इज बीइंग क्रिएटेड आइदर थ्रू मीडिया, प्रिंटेड मीडिया और लेट्स से न्यूज पेपर्स, द इंटरनेट, गूगल, राइट, एवरीवेयर. आजकल इतने सारी एप्स है जहाँ पे न्यूज आते हैं, राइट. प्लस मतलब एंड ऑफ कोर्स विद द इंटरेक्शंस इन देयर ओन सर्कल्स, इन देयर रिलेटिव सोशल सर्कल्स, राइट, प्रोफेशनल सर्कल्स. तो यहाँ सारी जगह से जो इनपुट मिलते हैं उससे एक ट्रेंड क्रिएट होता है कि भाई आजकल ये कोर्स कर लो तो अच्छा है, राइट. सो नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये एक परसेप्शन होता है कि एज इफ यू गो आफ्टर अ वेल डिमांडेड कोर्स, राइट, तो विद मिनिमल एफर्ट्स यू कैन एक्सेल. ये गलत परसेप्शन लोगों के अंदर है, राइट. तो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा ये अफेक्ट कर रहा है रादर देन कि मेरे लिए क्या अच्छा है या व्हाट आई एम सूटेड फॉर. एग्जैक्टली, मतलब लाइक जो स्टूडेंट को जहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए कि भाई हाँ ये ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है, Yes. बट देन व्हाट इज माय इनर कोर एक्सपर्टीज कि ये ट्रेंडिंग इंडस्ट्री में मैं अपनी कौन सी कोर एक्सपर्टीज लगा के जी. कौन से डिवीजन में जाके सीख के इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा एंड आई गेट अ Yes. बेटर रिजल्ट. वो Yes. कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है हमें आज Yes. के डेट में. मतलब see, I am not trying to convey that it is wrong to basically go for a course which is in demand. Yeah. See, common sense is and obviously मतलब it's quite obvious. If you go into a stream which is well in demand, तो relatively आपको थोड़े कम efforts करने पड़ेंगे Yes. to excel as compared to a course which is not in demand, right? तो वो तो बहुत मतलब सीधी सी बात है. But the point is, apart from that, हमारे लिए वो कितना suitable है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टोटली नॉट इंटरेस्टेड, इफ बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इफ यू आर टेकिंग दैट कोर्स, then even if it is in demand, even if many other people are excelling in that, it might not necessarily prove to be a good choice for you. ट्रू ट्रू ट्रू. So मतलब this is one thing. तो ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड का एक असर है. उसके अलावा दूसरा मैंने देखा है कि पेरेंटल प्रेशर या पेरेंटल एडवाइस, मतलब मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं. तो काफी बार इमोशनल इश्यूज भी होते हैं कि मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं,
just because your father is wishing you to become an engineer, so you should become an engineer. So I don't think so. Right, matlab like a student should always think, and rather I would say a parents and our society should Exactly. motivate the kids, Exactly. the teenagers to think in a way कि आप पहले खुद जानो कि खुद को क्या करना है, Exactly. राइट? हाँ, पेरेंट्स की इच्छाएं बहुत होती हैं, बट देन आजकल के जनरेशन्स में जिस तरह से सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आईटी का ट्रेंड है, और जो इन्फ्लुएंसेस है, उससे कभी कभी इनर थिंग रह जाती है, और हम जी सोसाइटल प्रेशर्स में कुछ डिसीजंस ले लेते हैं जी जो हमें एक स्टेज पे जाने के बाद रियलाइज होता है कि नहीं, हाँ एग्जैक्टली वो उस टाइम पे हमने लिया था, बट नाउ मेरा सोल ये कहता है कि आई थिंक आई कुड डू समथिंग बेटर विथ इफ आई हैव चूजन जी दोस, जी राइट? तो मेरे पास जैसे काउंसलिंग के लिए कुछ बच्चे आते हैं, मतलब एट द थर्ड ईयर, मतलब ऐसा समझो कि लास्ट सेमेस्टर से पहले उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार मुझे शायद बीबीए की जगह पे मैंने कोई और कोर्स कर लिया होता तो आई वुड हैव प्रूवन बेटर माई सेल्फ, क्योंकि उनकी कोर एक्सपर्टीज कुछ और थी, बट क्योंकि ये जी डिमांड में था मैंने ये ले लिया, या यस फिर मैंने आईटी में रोबोटिक्स में गया हूँ तो रोबोटिक्स की जगह पे मेरे, अब जिनका लॉजिकल ब्रेन जो है, अगर लॉजिकल ब्रेन अब उनको इतना सपोर्ट नहीं करेगा तो कुछ कुछ कोर्स में वो एक्सेल नहीं कर पाएंगे, भले कितना भी उनका यस इनर चॉइस होगा तो, राइट? यस तो ये सारा चीजें जो है आई बिलीव के काउंसलिंग के थ्रू हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड इवन पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं टू यस गेट द राइट डिसीजंस, यस राइट? यस हियर आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि स्टूडेंट को भी थोड़ा असर्टिव होना पड़ेगा अपनी चॉइस के बारे में, इफ ही इज क्लियर इनफ कि डैडी के या मम्मी जो भी है कि आई वांट टू गो फॉर दिस कोर्स इवन दो दिस थिंग इज इन डिमांड, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस, वो कहने की हिम्मत होनी चाहिए और वो क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, to parents also I would like to advise that see basically rather than being interested in whether my son or daughter is becoming a doctor or an engineer, it is more important to see to it that whatever field he enters, whether he becomes a teacher, whether he becomes a banker, whether he becomes, let's say, a hotel a hospitality Hotelier. guy, or whether he becomes a healthcare provider, in whatever field he goes, it's more important that he enjoys and he excels in that field. Yes. आप जो भी फील्ड में आप एंटर करो, राइट, जो भी फील्ड टेकअप करो, यू नीड टू एक्सेल इन दैट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन विच फील्ड यू हैव टेकन. So Yeah. in that case, I would like to say that it is better to become a good peon rather than become a bad engineer. Very A true, good a actually. good peon is more important, is a better asset for his organization than a bad doctor or a bad engineer. So it's important for us to excel in whatever field we are taking, and that field has to be taken as per our interest, as per our choice, and as per our capabilities. Since you are an admission counselor in Navratna, तो I wanted to understand कि अभी जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसमें किस वे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डिसीजन लेते हैं इन कोर्स सिलेक्शन? Okay. See, आजकल मतलब almost irrespective of again whether the student is from 10th standard or whether he is from 12th standard or whether he is from science background or commerce background, there are a few key factors or parameters कि जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स बेसिकली ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. आई विल कॉल दिस प्रोसेस बेसिकली एज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और द प्रोसेस टू जीरो इन फॉर दैट इंस्टीट्यूट और द कोर्स वेयर दे वांट टू टेक द एडमिशन, राइट. राइट. तो उसमें काफी सारे पैरामीटर्स वर्क करते हैं. तो जैसे हमने इसके पहले के सेशन में भी थोड़ा एक उसकी हमने वो डिस्कस किया कि फर्स्ट इज बेसिकली किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, कि भाई आजकल आईटी का ट्रेंड है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ट्रेंड है, रोबोटिक्स का ट्रेंड है. द ट्रेंड इज अफेक्टिंग फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज द डिफरेंस इन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट. थर्ड इज बेसिकली कि हर स्टूडेंट या हर क्लास में स्पेशली स्कूल लेवल पे क्लास के अंदर कोई रोल मॉडल्स होते हैं. सम स्टूडेंट्स या द डिसीजन ऑफ सम स्टूडेंट्स और देयर ओपिनियंस, दैट इज बेसिकली द गाइडिंग फोर्स ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स. तो भाई फर्स्ट रैंकर ने क्या किया, वो कौन सी ब्रांच में जा रहा है, वो कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहा है, राइट. तो दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अदर स्टूडेंट्स. फोर्थ इज व्हाट पेरेंट्स आर सेइंग कि भाई नॉर्मली जैसे मान लो इफ माय डैड इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो एक हिडन प्रेशर शायद या हिडन एक ऐसा एक माहौल रहेगा घर में कि मुझे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए. या अगर if my dad is let's say businessman or commerce, right, तो काफी बार पेरेंट्स का भी जो पेरेंटल ऑक्यूपेशन है that is also at times affecting the students mindset. Right. And at times parents do insist a little bit कि भाई हमारा बिजनेस ये है कि since your dad is in this thing or your dad and mom both are involved in this thing, you should also get involved in this thing. Yeah, true. वो भी रहता है.
काफी बार पेरेंट्स के खुद के एस्पिरेशंस होते हैं, जैसे डैडी बोलते हैं नहीं भाई तुझे तो इंजीनियर ही बनना है, मेरे बचपन मतलब बचपन से मेरा ये ख्वाब है, राइट, कि भाई व्हेन यू आर स्मॉल कि भाई मेरा लड़का बड़ा होकर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा या कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा बनेगा तो इस तरह के भी मतलब मेनी टाइम्स दिस काइंड ऑफ प्रेशर इज देयर. राइट. Apart from this, there are certain other factors also, जैसे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ फैमिली. फॉर एग्जांपल जैसे भाई कोई है, लिमिटेड इनकम है फैमिलीज की, तो उस वक्त भी काफी बार इंस्टीट्यूट्स का या कोर्सेज का लिमिटेशंस आ जाते हैं. सम इंस्टीट्यूट्स और सम कोर्सेज दे चार्ज क्वाइट हाई फीस, राइट. ऑफ कोर्स वो बात अलग है कि एज ऑन टुडे इफ अ स्टूडेंट इज डिजर्विंग then most of the good institutes they are offering scholarships. So private scholarships are also being offered. Even there are so many governmental schemes, state government, central government scheme. There are even some private institute, I mean private charity organizations. Yes, yes. जैसे caste based या religion based भी कुछ groups या organizations होते हैं which are offering basically scholarships to deserving students. So even though this financial constraint or factor is there, but I think compared to yesteryears, as on today, वो issue इतना ज़्यादा acute नहीं है. अगर स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, इफ ही हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली वेल इन हिज एकेडमिक्स एंड इन स्कूल, so I don't think that getting financial help is a big problem, or at least if not 100%, at least a major portion or major percentage of the course that is definitely the borne by the scholarship amount, right? Right. So including National University and including almost all institutes, I have observed that giving scholarships to deserving students at least is a very common thing. तो आजकल फाइनेंशियल पार्ट इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, प्रोवाइडेड स्टूडेंट हैज गॉट समथिंग टू शो एंड समथिंग टू some proven track record. Yeah. That is one thing. Second thing, at times जैसे पेरेंट especially in case of girl students, again fortunately अभी ये माइंडसेट काफी कम हो गया है, बट स्टिल इन सम ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज ऐसा होता है कि भाई आई डोंट वांट टू सेंड माय गर्ल चाइल्ड टू हॉस्टल और अदर सिटी, कि भाई मुझे लोकली जो जहाँ पे एडमिशन मतलब मिल रहा है I'm satisfied by that. Yeah, right? Yes, yes. वो so, yes, distance. Exactly. Then some stream में भी कभी-कभी ऐसा होता था, bias हो जाते थे, but now the things have been changed. Yeah. Yeah. Then at times, और इसके अलावा आजकल अभी students have become quite smart, especially after the advent of the internet. So they search the internet which is the best course, which is the best institute, right? And there are many dedicated portals and websites which are offering, but they are giving reviews in their own way. Again, how they are giving the reviews, that is a separate issue, right? We are not into that. Yeah. And to what extent it is correct, it is valid, right? It is dependable or authentic. That is a separate issue. But nevertheless, this kind of websites are there. And आप search करो Google में तो you can find out, okay, कि मतलब they are giving different kind of ratings. तो students काफी बार इस तरह के websites भी मतलब refer करते हैं, and then they derive their own conclusions कि भाई this institute is best for me. एट टाइम्स फैमिली के अंदर कोई बड़ा भाई है कि कोई रिलेटिव है कि कोई फैमिली फ्रेंड है, वो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में है, राइट, एंड दैट पर्सन इज गाइडिंग द होल प्रोसेस और ही इज बायसिंग और इन्फ्लुएंसिंग द होल प्रोसेस. या मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मेरे चाचा के एग्जैक्टली यहाँ चाचा के सिस्टर के लड़के ने ये किया है एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल एंड दैट एग्जांपल इज रूलिंग होल फैमिली. यस, तो ये भी काफी बार मतलब कि दैट पर्सन इज गाइडिंग द होल प्रोसेस, राइट. तो इट्स बेसिकली मतलब कंपोजिट फंक्शन ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स. तो अब होता क्या है कि ये सारे एवेन्यूज पे से एक पर्टिकुलर जो फैमिली होता है वो डेटा कलेक्ट करता है, एंड देन दे कलेक्ट दिस डेटा एंड देन अल्टीमेटली द डिसीजन इज टेकन, राइट. नाउ आई वुड कॉल दिस प्रोसेस एज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. इन्फॉर्म्ड इन द सेंस you are getting inputs, you are getting data from a variety of sources, right, and then you are taking a decision. अब मेरा एक ही क्वेश्चन है, आपने इतनी सारी जगह से डेटा लिया वो बहुत ही अच्छी बात है, एंड इफ नॉट 100, more than 90-95% of your data is correct also. We are not debating that also. वो more or less reasonably अच्छा है. But point is, अब इतने सारे अलग अलग क्राइटेरिया, उसमें कौन से क्राइटेरिया को आपको वेटेज देना चाहिए, राइट? That is one part. And second thing is, see, you have got information, external information about the institutes, about the courses, but in this whole process, whether that thing or that course is suitable for you, तो आपका खुद का जो सेल्फ एनालिसिस है, योर सेल्फ पार्ट, दैट इज ग्रॉसली मिसिंग. मतलब जैसे गूगल पे आपने ये तो सर्च कर लिया कि विच इज द बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट नियर मी, बट व्हाट इज माय बेस्ट स्किल, व्हाट इज माय इनर बेस्ट थिंग, वो गूगल नहीं बता सकता. एग्जैक्टली. होटल के अंदर आपने मेन्यू देख लिया कि भाई ये अच्छा है, इतना सारा मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन अभी आपका जो नेचर है, आपकी जितनी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी है, राइट, या आपकी जो एलर्जीज है,
उसके हिसाब से आपको किस तरह का फूड ज्यादा सूटेबल है, वो एनालिसिस भी किसी को करना पड़ेगा ना। वो तो एक्चुअली आपको ही करना है, बट इफ यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू डू दैट एनालिसिस, देन somebody needs to guide you for that, and then you need to order that appropriate food in the hotel. So it is something like this. वो खाना तो सब अच्छा ही है, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है, that is the most important पर्सनल question. थिंग। Exactly. हर जगह पे एक्चुअली सब पर्सनल डिसीजन, सबको कस्टमाइजेशन चाहिए, बट व्हेन जी दिस डिसीजन कम्स के जहाँ पे दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, exactly योर करियर, योर प्रोफेशनल ग्रोथ, exactly वहां पे शायद हम चूक कर जाते हैं हम किसी बाहर से एडवाइस लेने में, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, राइट, या exactly पर्सनल अपनी स्किल्स के लिए। exactly मतलब हम डेटा सब जगह पे लेते हैं, लेकिन डिसीजन फिर खुद ही ले लेते हैं हम, बेस्ड अपॉन आवर कन्वीनियंस एंड आवर Convenience. प्री कंसीव्ड नोशंस और Right, आवर बायसेस, राइट। तो right. मेरे हिसाब से दिस इज द दैट स्लाइड फ्लॉ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो प्रोसेस किया वो गलत किया, आप डेटा लीजिए, आप इंफॉर्मेशन लीजिए, आप फीडबैक लीजिए हर जगह पे, दैट इज फाइन। बट अल्टीमेटली वंस दिस डेटा इज देयर, दिस डेटा विल हेल्प यू इन स्लाइटली नैरोइंग योर चॉइसेस, राइट। दिस प्रोसेस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल, बट अल्टीमेटली अब जैसे मान लो 4-5 आपने चॉइस शॉर्टलिस्ट की, अब उसमें से बेस्ट कौन सा है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए यू डू रिक्वायर द इंटरवेंशन of a qualified person who can judge your capabilities, who can judge your interests, and then accordingly suggest you that see this is probably the best thing you can go for, and if not this, then this could be possibly your second best choice, and so on. मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, fortunately or unfortunately, education is one of the fields which is at times the decisions regarding that are taken in a very trivial way. मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके घर पे कोई सपोज गेस्ट आने वाला है, राइट, अब आपको डिनर के लिए जाना है, तो उसके लिए भी आप रिसर्च करेंगे, राइट, कि भाई वो गेस्ट को कौन सा फूड अच्छा लगता है, आपके विसिनिटी में कौन से रेस्टोरेंट्स है, उनके गूगल रिव्यूज क्या है, राइट, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अब एग्जैक्टली, तो एक वन टाइम इवेंट के लिए आप इतना इतना टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, बट काफी बार हम एजुकेशन के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज somebody told that XYZ course and ABC university is good and we will take admission. That's it. I have seen many families, जब हम काउंसलिंग के में बैठते हैं तो कई बार मैंने ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि मतलब दिमाग में बिठा लिया है कि भाई मुझे ये इंजीनियरिंग करनी है। बाय द टाइम द स्टूडेंट इज इन 9th स्टैंडर्ड, इफ ही इज थिंकिंग एंड ही हैव थॉट कि भाई मुझे रोबोटिक्स करना है, या फिर लेट्स से मुझे शेफ बनना है, मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, बट बाय द टाइम ही रीचेस 12th क्रॉस करता है, जब वो एक्चुअली प्रोसेस का टाइम आता है ना, तब या तो वो डिसीजन एकदम गायब हो गया होगा, क्योंकि 3 साल में इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, राइट। अगर सही में वो स्किल है, तो फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा ही नहीं कि भाई मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, वो दूसरे ऑप्शंस के लिए कभी सर्च भी नहीं करेगा कि शायद मेरी स्किल्स को लेकर और भी बेटर ऑप्शंस है। उसका काउंसलिंग या फिर उसका सर्च करना ही मिस हो जाता है। ऐसे भी कई एग्जांपल्स मैंने देखे हैं इसमें। I can even cite one more example apart from this restaurant one, which was quite trivial one. आजकल everybody is earning money, right, and everybody knows the importance of investing their money in proper avenues, right. Your money should grow over a period of time. Yes. Now there are various investment options available. You can go for fixed deposits, you can go for stocks and shares, right, or you can go for real estate, you can go for gold, depending upon your choice and your financial goals. Yes, right. Yes. So people as on today, they don't hesitate to appoint a financial planner or a financial consultant for themselves, right. True. तो आपके पास जितना पैसा है उसको अच्छी तरह से कैसे इन्वेस्ट करें, या 10 साल के बाद वो बहुत अच्छा ग्रोथ करे, उसके लिए आप कंसल्टेंट रखना चाहते हैं, एंड यू डोंट हेजिटेट इन टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। बट अभी तक जितना पैसा आपके पास आया है वो कहाँ से आया, तो इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट करियर डिसीजंस यू आर टेकिंग। तो जहां से इनफ्लो आपका अफेक्ट हो रहा है, तो वो डिसीजन लेने के लिए क्यों हम इतना हेजिटेट कर रहे हैं, व्हाई डू वी हेजिटेट इन टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काफी सारे पेरेंट्स या फिर सोसाइटी में बड़े बड़े लोग भी मिस कर जाते हैं, तो मैं आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि इसके लिए 2-3 रीजन है। एक तो ये है कि मेनी ऑफ द पेरेंट्स, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट टू टेक प्रोफेशनल एडवाइस और प्रोफेशनल काउंसलिंग एडवाइस रादर, बट परहैप्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, कि इस तरह के भी लोग प्रोफेशनल पीपल है कि हु हैव गॉट वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स through which they can assess the capability of the student and then accordingly suggest a proper course for him. ट्रू। मैं इसमें मेरा ही एक एग्जांपल, सिंस आई एम अ DMIT काउंसलर, मैंने जब
नया शुरू किया, मैंने जब सर्टिफिकेशन लिया, ट्रस्ट में मुझे ऐसे पेरेंट्स भी मिले हैं कि जिन्होंने कहा, अरे डीएमआईटी ये तो काफी पुराना है, बट देन इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अरे बट प्रोसेस इज व्हाट, डीएमआईटी एक ऐसा मेथड है जिससे आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, बट देन राइट टाइम पे उसका कहीं यूज करना, उस रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है एट द जब एक्चुअल में आपको जरूरत है, एट द टाइम ऑफ कोर्स सिलेक्शन, एट द टाइम ऑफ जॉब सिलेक्शन, है ना। अभी जैसे आपने बोला कि आपको बिजनेस करना है, ठीक है, बट बिजनेस में कौन सा बिजनेस करना है, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ट्रेंड को देख लिया, अरे इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा एंड यू आर इनटू इट, नहीं। बट आपकी इनर कैपेबिलिटी किसमें है, आर यू गुड इनटू सेल ऑफ दैट बिजनेस, आर यू गुड इनटू यू नो, आपका अगर लॉजिकल माइंड ज्यादा चल रहा है तो ही आप कुछ ट्रेड्स की डील कर पाओगे। अगर आपका क्रिएटिव माइंड ज्यादा चल रहा है तो आप सिर्फ उसी के इर्द गिर्द रहोगे, आप सेल्स नहीं कर पाओगे। तो ये जो सारे डिसीजन है वो एक काउंसलिंग मेथड और सिस्टम के थ्रू अगर आप लेते हो और Exactly. उसको समझते हो तो इट्स अ Exactly. वेरी गुड पार्ट टू आपके सक्सेस रेशियो Exactly. बढ़ जाता है। Exactly. मतलब यहाँ पे अगेन आई वुड लाइक टू थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस कि सी ये जो हमने इन्फॉर्म डिसीजन वाली बात की इसके पहले के डिस्कशन में, नाउ व्हाट वाज मिसिंग इन दैट वाज बेसिकली टेकिंग मतलब नॉट ओनली एन इन्फॉर्म बट अ काउंसल्ड डिसीजन यस, where a professional counselor is involved. Again, I would like to clarify here. See, we do not. I am not saying that basically that professional counselor will be providing you a solution on a turnkey basis. Turnkey basis in the sense आपको सीधा कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन वो एडमिशन रिसिप्ट लाके आपको देंगे. It's not like इट्स that. नॉट लाइक It's not like that. The role of the professional counselor will only be to only to identify your interests, identify your capabilities, and basically suggest that which branch or which course is suitable for you, not necessarily the institute. इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट आपको जो मतलब सी वंस आपकी इतनी क्लैरिटी आ गई कि हाँ भाई मैं इस ब्रांच के लिए कि इस डिसिप्लिन के लिए बना हूँ, अगर उतना भी क्लैरिटी आ जाता है राइट, एंड इफ यू आर एबल टू जीरो इन ऑन दैट, आई थिंक मोर देन 80% ऑफ द जॉब इज डन. आफ्टरवर्ड्स to find out a suitable institute, there are ways and methods for that. And for that, again, if you want to take help from the counselor, whatever information they are having, they might share it with you, of and you course, and you are independent enough to take that decision. So 100%, again, let us not mix up these two things. That this counselors are not supposed to impose that on which institute you which want to take institute you admission. should go. Their job is only to identify your capabilities and interests, and identify in a broad way that which kind of branches or disciplines would be more suitable for you. I think that is True. the and I don't think there should be any hesitation in taking this kind of a professional help. Once you zero in on the appropriate branch, I think not 50 but 80% of the job is done. तो यहाँ पे ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, वो आपको एक ब्रॉड आइडिया देते हैं कि आपको किस तरीके से कोर्स सिलेक्ट करना है, आपके लिए कौन-सा बेटर कोर्स रहेगा, बेटर स्ट्रीम रहेगा, राइट? बट जैसे आपने बताया कि एक एडमिशन काउंसलर हू इज़ रिप्रेजेंटिंग वन इंस्टीट्यूट और अ यूनिवर्सिटी, उनके पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अपने पास जो भी कोर्सेज़ हैं, उस सबको प्रॉपर वे में आपको इसे पास प्रेज़ेंट करें, राइट? बट देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर यू और आपकी स्किल्स को लेकर क्या है, वो पर्सनलाइज्ड वे में डिसाइड करने के लिए यू नीड टू विजिट अ प्रोफेशनल काउंसलर. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, Yes, राइट? yes. Would you like to add something, Yeah, please? yeah. So see, yes, you rightly mentioned. Basically, there are two different kinds of counseling which we are talking about, and both of them are important. First is see when just if you try to correlate what we have discussed in the previous sessions. So basically, once the student has accumulated information, feedback regarding various courses, regarding various institutes, right, and plus searched on the net regarding the reviews and everything, and after that, right, he might have zeroed in, or he might have at least narrowed down the search, narrowed down the options. That okay, probably these are the things which I can go for. Now, what I suggest is that at this point, he should be visiting a counselor or should be taking professional counseling services, which will help him to identify that actually what are his interests, his technical and academic interests and capabilities, and which will help him to select the best course or best branch or discipline as per his interests, and more importantly as per his aptitude and capabilities. Then the question comes that okay, once you have identified the which branch is suitable for you,
now in which institute you should go, or whether you should prefer a local institute, or whether you should go to some remote place or to some other city, or whether you need to relocate. See, that is all a personal choice, right? Based upon one's own individual constraints, financial constraints or social constraints or whatever. So that I think is a separate issue. So for that you need to basically visit those institutes in which you are interested. And again, there basically in all institutes they do offer admission counseling. तो एडमिशन काउंसलिंग में ये होता है कि जब कोई एक्सवाइजेड इंस्टीट्यूट में आप गए, तो वहाँ के जो एडमिशन काउंसलर है वो आपको वो इंस्टीट्यूट कौन से कोर्सेज या कौन सी डिसिप्लिन ऑफर कर रहे हैं, उसकी क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटीज है, और वो प्रोग्राम के वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या मतलब व्हाट आर द फ्यूचर एवेन्यूज, राइट, आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। जो लोग ने ये कोर्स पहले कर चुके हैं तो वो लोग अभी कहाँ पे है, हाउ दे आर डूइंग, इसके बारे में वो बता सकते हैं, राइट। इन शॉर्ट दे कैन हाईलाइट द वेरियस प्रोग्राम्स, वेरियस कोर्सेज, Which has been offered by their details regarding fee structure or various innovative practices which they are following at their institute, as well as the placement prospects, career prospects for that particular course. ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होगी वहां पे। बट ये सारी इनमें से कौन सी चीज वो स्टूडेंट के लिए सूटेबल है, वो प्राइवेट काउंसलर जो है वो डिस्कस करेंगे, वो एडमिशन काउंसलर का काम है। एडमिशन काउंसलर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे कि व्हाट देयर पेरेंट इंस्टीट्यूट हैज गॉट टू ऑफर। तो आई थिंक ये जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट के लिए समझना जरूरी है। तो वंस आपने एक बार सही ब्रांच या सही डिसिप्लिन आइडेंटिफाई कर दी, after that which institute you are preferring, that is I think it's one's own personal choice, so that I think he can zero in or identify by personally visiting the said institutes, right, and then accordingly he can decide. Sure.